Okay, good morning to all students. So today we are studying your financial management subject. Financial management is very useful for all the students, not only for exam point of view, it is also useful for investment. Suppose if you want to invest in share market, without this subject knowledge, practically it is not possible for you. Because to invest in share market and if you want to get good returns, financial management subject knowledge is compulsory required. Reason is financial management subject will provide complete information about stock market basics. What fundamentals are required before investing in stock market, that will be understood by students through this financial management subject. Simple example, from past 3-4 sessions there is a panic selling in Indian stock market. Clear? Means 3 days before Nifty fall by 460 points. Yesterday it is fall by 333 points. Before that also there is a panic selling. So if you purchase fundamentally very good stock, even if there is a panic selling also, there is no need to worry. Compulsory your portfolio will be in means green zone only, not in red. Even if stock falls also, it will bounce back and compulsory will get your means required returns. So in group 2 financial management subject, you will learn the basic things about the stock market. Before investing in that, what fundamentals you have to study. But if you want to become complete gainer of the stock market, then you have to study final level FM also. Thereafter you can invest in derivatives also, options and future also. Clear? Because in a stock market different segments will be available. Futures and options means cash segment, intraday, different. So from intermediate level you cannot understand derivative part, future options part you cannot understand. For that you have to study final level financial management. Clear? So intermediate level point of view, you can understand how to invest in long term point of view. Suppose you want to invest in market for a longer period of time, like 3 months time, 6 months time, 1 year time, 10 years time, then which stock is better? Before investing in that, how to decide which stock performance is good and in which stock we have to invest. And apart from that, you can use this subject for your daily business decisions also. Suppose you want to become an entrepreneur, then to become the entrepreneur, what is required? You want to convert your business from a small business to big business, what points are necessary? How this subject you can utilize in your business to develop the business. All this will be covered in financial management. So this is very good subject, knowledge point of view also, plus a scoring subject. Clear? Because when you learn this subject, automatically more interest will come. Clear? So this is the specialty of this subject. Okay? And your involvement is also important. One more point also I will share with the students. Whatever fees students will pay in this subject, with my advice you can get refund that. But for that you have to take some risk, you have to invest in the stock market. Whatever you paid, you can earn more than that. That guarantee I will give. Clear? Because directly I will connect this subject with the stock market. Wherever necessary. In all topics that is not compulsory, but wherever necessary, directly I will link. So if you have patience, if you have interest and some additional money also, you can invest and you can get back your fees refund in the form of returns. Clear? See, but according to my advice, you have to act because you are a first time learner, so you cannot take decisions from your own. Then only you can get good returns. Right? So we'll start now. So in financial management, first this subject is divided into 2 parts. Actually financial management and strategic management for CA students. And for CMA students, it will be financial management and data analytics. So financial management segment is same for both. Okay, so there is no change.
So financial management, first this is covering the three different divisions. First division is financial statement division. Okay, financial statement division means everything is related to financial statements. To understand the financial statement in depth, complete in-depth way, systematic way, clear, then what financial management tools will be used. Clear? Financial management subject will provide analysis part, interpretation part also. Financial accounting will covers how to prepare the financial statement. But how to analyze financial statement, how to interpret the financial statements, you will learn from financial management. So first part of this particular subject is about financial statements. About what? Financial statements. How to analyze and interpret the financial statements. So in that, first topic is ratio analysis. So ratio analysis is the topic from which you can analyze the financial statements and you can interpret. It is nothing but what are the strengths of the companies, weakness of the companies. Okay, how to analyze that, how to interpret that, that will be covered in ratio chapter. Thereafter, cash flow statement. Cash flow statement is also related to your financial statement. So in cash flow statement also we need to cover the financial statement area. Clear? Then 4 major types of decisions are covered in financial management. What are those decisions? First is investment decision. Second is financing decision. Third is working capital decision. And fourth is dividend decision. So entire subject is divided between these 4 decisions. Okay, so every finance manager has to take these 4 decisions in the business. First decision is investment decision. Investment decision means investment in capital project. Clear? Like recently there is a meeting. Okay, Vibrant Gujarat. Maybe you have heard about that, or only you are busy in films and other activities only. Okay, suppose once you join CA CMA course, you should have the access with CNBC and Z business and your finance news. Then only you can get good knowledge. Vibrant Gujarat meeting conducted in the Gujarat. Clear? So in that meeting, Mukesh Ambani announced that this much of investment I will made in Gujarat. Adani Group mentioned this much investment will made in Gujarat. So why that Vibrant Gujarat Summit has been organized? Because different companies from throughout the globe will come and they will start different types of setups in Gujarat. Understand? So because of that there is almost all zero unemployment in Gujarat. Because each and every type of industry is available. Clear? So investment, because I am giving this example, investment is coming now. So what type of investment? Projects. New projects will be started. So before investing in the projects, companies will evaluate कि investment should be profitable or not, or directly they will invest. Compulsory they will evaluate कि before investing this is profitable or not. So that will be decided by finance manager. Ki if the investment is made, how much investment should be made? Okay, which is providing return or not? If not giving any return, there is no sense in investment. Clear? So investment decision. Investment decision means before making the investments in capital project is profitable or not, project is generally good for the company or not, will be evaluated. Thereafter decision will be taken. This is also called as capital budgeting decision. Your decision is also a capital budgeting decision. You have decided to join CA CMA course. This course is having 3 years investment, 3.5 years investment, right? In this 3.5 years investment,
only investment is required, no return will come. Only return will come in the form of stipend when you join the practical training. Clear? Before that, only investment, after that, only investment. Once your investment part is successfully completed, then result will come. Clear? If your investment part is not good, your contribution inputs are not good, project fail. So big projects also same. The investment decision means before investment, project is profitable or not, that will be decided. Then arrangement of funding is also decided. Suppose if project is profitable, that is confirmed. Now, no businessman will invest his own funds except when they will have heavy reserves and surplus. Okay. Thereafter, suppose if even they have some reserves and surplus also, maximum businessmen will not use their own money. They will borrow. They will borrow, and borrowed money will be used. What is used? Borrowed money will be used. Clear? So that is called as what? Financing decision. Because to invest in project, finance required. From where you will arrange the finance? Long term, medium term, short term. There are different sources of finance. Okay. So for long term, you have to approach capital market. For medium and short term, you have to approach money market. Clear? So company can arrange the funds from issuing shares, issuing debentures. Clear? Or they can borrow the term loan. They can issue different types of securities, or they can issue bonds also, or they can use their own reserves and surplus also. Clear? So this is what? Financing part. So this is called as financing decision. Suppose if they borrow the money, they have to repay the cost. They have to repay the cost. So always borrowing should be done at minimum cost. So in which combination, if borrowing is taking place, the cost should be minimum. That should be evaluated by finance manager. If you are borrowing the money not in systematic way, cost will increase. So in financing decision, finance manager target is what? In which combination funds should be borrowed. In which combination funds should be borrowed. Clear? So that cost should be minimum, return should be maximum. Next is working capital decision. Like you purchase plant machinery, investment decision. You have labor also, but you don't have material. So you can manufacture the goods, not possible. So once you purchase plant assets, it has to be utilized or not. For utilizing the assets, material, labor, overheads required. So for this also again funding required. That funding is working capital. That funding is what? Working capital. Working capital again, it has to be financed, or it may be used by companies' own resources. Suppose it is financed, so from which way it should be financed? For that we have to estimate the working capital. So that is working capital decision. Then last and final decision in finance manager has to take is dividend decision. Dividend declaration is not compulsory by every company. It is optional. They can declare dividend also, they cannot declare dividend also. Some companies will declare, some companies will generally reinvest the profits. If they declare how much dividend should be better, in what way dividend should be given, then that is the matter of board decision. The board of directors will decide that. If they declare, then how much dividend should be declared? Clear? What is the impact of that on share price? What is the impact of that on companies' operations of the business? That have to be checked by the board of directors. So for this we have to study dividend decision topic. So in this way your entire subject is divided in 4 decisions. Clear?
So before starting this subject, first exactly what is financial management I will explain. Directly I will not start ratio analysis. Suppose in first class if I explain theory, generally some students will feel bored. So directly I will not start theory here. Only some part of theory I will explain, then I will start practical topic. Okay. So financial management is the subject we are discussing. So financial management means what? Financial management means procurement of funds. Financial means procurement of funds. Management means effective utilization of funds. So financial management is ultimately called as procurement of funds and effective utilization of funds. Means from where we have to procure the funds and in which way we have to utilize the funds in effective manner. That is called as financial management. Clear? So it is a risk return analysis subject. It is a risk return analysis subject. When you procure the funds, it will have risk. And why you are raising the funds? To get some returns by making the investment. Clear? So financial management ultimately called as what? Procurement of funds and effective utilization of funds. Procurement of fund means from what are the resources available, from those resources funds should be raised, and effective utilization means investment part. Clear? Understand? Next, what are the major decisions of financial management or functions of finance manager? Major decisions of financial management or functions of finance manager is 4 already I explained. Investment, financing, working capital, dividend. These are the 4 major areas of financial management or functions of finance manager. Clear? Now simple question I will ask you. Exactly what is financial management? From that you will understand. Okay? This is general question. Okay, first here. Yes. Suppose if I given one offer to you. Suppose you have one offer, finance offer from your parent. Or suppose any XYZ person. You want 10 crores rupees immediately or 20 lakh rupees every month till your death, or 20 lakh rupees per month till your death. So which option you will prefer? Second option. Very good. Next, same question. Suppose 2 options are available. 10 crores rupees immediately or 20 lakh rupees per month till your death. Second option. Very good. Here last rows. Second option, huh? Okay. First option. Here. First option or second option? Means you have 2 options available with you. 10 crores rupees immediately or 20 lakh rupees per month till your death. तो 20 लाख रुपीस पर एनम लगा लो, पर मंथ लगा लो, उससे कोई मतलब नहीं है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है? यस, हियर सेकंड ऑप्शन. नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन. So here answer is divided. Some students are saying first option, some students are saying second option. Okay, now the students who have given second option answer and the students who have given first option answer, both are thinking ki my answer is correct, my answer is correct. Now there is a requirement of financial management. Suppose if you pick second option, suddenly next year if you die, लॉस और नॉट? अब बोला नहीं चाहिए सडनली, बट फ्यूचर इज अनसर्टेन ना भाई.
Future is certain or uncertain? Uncertain na. So loss or not? Loss. Clear? Compulsory loss ना. तो 10 crores divided by 20 lakhs. डिवाइड करो कैलकुलेटर पर. टेन करोड़ डिवाइड बाई 20 लैक्स. 20 लाख निकाल दो, 2 लैक्स कर दो, चलो कोई बात नहीं. 10 करोड़ डिवाइड बाई 2 लाख करो, चलो. 10 करोड़ डिवाइड बाई 2 लैक्स. टेन करोड़ डिवाइड बाई 2 लैक्स करो, चलो. कितना रहा है? 100. 500. तो 500 मंथ्स होना पड़ता आपको. You survive 500 months only, then it is recoverable. तो 500 डिवाइड बाई 12 करो फिर. अब यहां से 41 ईयर जीवित रहना तुम. अब then second option is beneficial. Clear? Otherwise first option is beneficial. Clear? First option is beneficial only when you are effectively investing and getting the return. Suppose 10 crores you got and you went to Las Vegas for casino. Then within 2-3 hours, 10 crores will be zero. So proper investment required or not? So from both sides, option 1 can be beneficial, option 2 can be beneficial. But if you have proper investment strategy, then first option is beneficial. Which one is beneficial? First option. Because 10 crores if you deposit in a bank also, bank will offer 6% return minimum. Nowadays 7.5%. Okay, so 10 crores into 7.5% कर दो, कितना हो गया? 7,50,000. So minimum 7,50,000 return you will get. Okay, suppose if you invest 10 crores in any company shares, which is a very good company, like Dr. Reddy Lab, Tata LXI. Clear? अदानी के शेयर में लगाए तो हार्ट अटैक भी आ जाता. फिर अदानी के शेयर में लगाए तो आपको बहुत ताकतवर होना पड़ता. रिस्क रिटर्न ज़्यादा है उसमें. रिटर्न इज गुड बट रिस्क इज ऑल्सो हाई. क्लियर? तो टाटा ग्रुप में लगा दिया आप तो 20% ऑन एन एवरेज एवरी ईयर रिटर्न यू विल गेट ना. तो 10 लाख इंटू 20%, हाउ मच रिटर्न यू आर गेटिंग? 20% 10 करोड़ का कितना हो गया? 2 करोड़ हो गया है. क्लियर? डिवाइड बाई 12 मंथ्स करो. मच तो 16 lakhs पर मंथ आ जाता आपको फ्रॉम योर ओन इन्वेस्टमेंट. शुड नॉट गो टू दैट पर्सन एंड आस्क अगेन एंड अगेन. So proper investment required. Suppose you are not taking any risk, you are investing in risk-free FD, then 6.5% net return will come. 1% tax में चले जाता है वो तो 6.5% net return will come. That is also good. But proper investment required. So if you invest properly, definitely you will get good return. If you do not invest properly, 10 crores can become zero also. So that is the importance of financial management. Clear? Like you given incorrect answer. The second option is beneficial. Clear? Because future is uncertain. So you have to survive for 41 years. 2 lakh rupees per month means. So future is uncertain. So if you do not opt first option, loss to you. Suppose you selected first option and properly invest, first option is beneficial. But if you selected first option not investing properly, lavishly you are spending, then second option is beneficial. So this is the role of financial management. This is the reason you are learning financial management. So management of finance is called as financial management. Like human beings, money will have the legs. You properly invest, it will fly also. It will fly also. You do not invest, it will become handicap also.
Clear? So investment is compulsory. Without investment, you cannot think about returns. An investment compulsory subject to some risk. Now suppose in this age only, if you invested some money, like suppose you became chartered accountant or cost accountant in 20-23 years age, first earning 10 lakh rupees package you earn, parents are not dependent on you, compulsory. Your money you can invest in a good stock or in a mutual fund scheme. Then when you retire at 50 years age, then that investment will be giving very huge returns to you. Suppose you started investing in 50 or 40 years time, then there is no sense in that. That is also good, but time is less, return is also limited. So from 20 years to 50 years, 30 years time span, whatever you invested, very high return will come, like crores of rupees. So investment is compulsory. Because middle class people generally spend the money on functions, they will spend the money on unnecessary activities, but they will not invest in market, mutual fund, gold. Clear? So compulsory investment required. So financial management will provide this lesson to you. Key compulsory investment required. Okay? After learning, automatically you will become knowledgeable person ki what is the power of investment and how to invest. This is the reason you are learning this subject. Clear? Like before investing, you should have knowledge also now. Where I have to invest. So that knowledge will come from this subject. Okay, chaliye, so we'll start now. So first topic which we are studying right now is analysis of financial statements. Topic name is what? Analysis of financial statement. In this topic, subtopics are available. In those subtopics, first subtopic is ratio analysis. Accounting ratios or ratio analysis. Clear? Compulsory chapter, examination 10 marks. One question will compulsory come. Right? So analysis of financial statement we are studying. In that first subtopic is ratio analysis, or this is also called as accounting ratios. Now why you are learning this topic? First we should understand. Okay? Suppose today your father is giving 2 lakh rupees to you and your father is generally checking your knowledge. See, this 2 lakh rupees you have to invest. So where you will invest? Take your own call. Reliance Industries, okay. Mutual funds. Gold bond, okay. The blue chip companies. Means first point which is coming in the mind of you is what? Whether I should invest in mutual fund, whether I should invest in bond, whether I should invest in shares, okay, whether I should invest in gold. Clear? Whether I should invest in real estate. Real estate 2 lakh rupees, less amount, not possible. So gold option, okay. Second is mutual fund option. Third is bond market. Fourth is shares. Fifth is fixed deposit also. Fixed deposit also. Clear? So which option you will prefer now? Suppose if you want guaranteed return. What return? Guaranteed return. Fixed deposit best. Fixed deposit is best. Because market up, down, fluctuation is taking place. What is going to happen? You are not worried about that. You invested, you are sleeping. Clear? Or you are not doing anything also. Bank will pay compulsory 6.5% or 7% interest. It is guaranteed. Subject to some tax. Okay. Next. Suppose if you invest in gold,
Gold is having some risk. Prices can increase also, prices can decrease also. Mostly it will increase, but sometimes there is a possibility of decrease also. So there is some slight risk involved in that. Clear? So this is depends on your knowledge. By if you are forecasting ki gold prices will increase in future and there is a certainty in your decision ki it will increase, you will go for gold investment. And in gold if you invest, generally risk is compared to market, stock market less. In stock market risk is high, right? At least at whatever cost you purchase the gold, that will not become negative. In very extreme scenario, rare scenario, it will be negative, right? Like for 63,000 rupees per 10 gram you purchase gold. So after 1 year, 2 years, in very extreme cases, gold price will be less than 63,000. Compulsory it will be more than 63 only. In very extreme scenario, it will be less. So risk is very less as compared to stock market, but return is also less. From 63,000 to it will not become 1 lakh. Maximum 65,000, 67,000 like this. Between this gold can quote, right? So return is also limited. Next is mutual fund. Mutual fund means generally it is like online ordering of food. Online, like you are doing a job, you don't know how to make coffee, how to make tea, you don't know how to make breakfast, and you don't have patience also, and you don't have interest also. So ultimately what you do? Zomato or Swiggy. Clear? You will order and you will consume. Ready-made food available. So mutual fund also same. So in mutual fund if you invest, professional management will be there. You should give 2 lakh rupees to that professional management, portfolio manager. That person will invest and he will provide some returns to you. Depends on how you invest it. Clear? So minimum 15-20% return they will guarantee to you. But that depends on also what? Market performance. If market is going means in upper side, compulsory you will get good returns. If market is on bearish side, then you will get less returns. So that is also subject to some risk. So mutual fund selection is very important. In which mutual fund company you invested? Because in market so many mutual fund companies available. So many banks also offering mutual fund services. Investors will offer different mutual fund services. So which in that also different types of plans available. It is not like Zomato, Swiggy, 2 options only. In mutual fund, so many plans available, so many companies available, so many options available. So which type of mutual fund you selected depends on that your return will decide it. It is not like easy. 2 lakh rupees है ना, 2 लाख परेशानियां भी रहते वहां पे. In which mutual fund I have to invest? समझ में नहीं आता आपको? Because in market 500-600 types of schemes are available. 500-600 types of schemes are available. In which scheme you will invest? Generally you will invest according to percentage of return, but that is past. In future that is not guaranteed na. So it may possible, it may not possible. So from 500-600 different types of schemes you have to select one of the plan, in that you have to invest. So for that also some information is required. What is required? Information. You have to collect the proper information, then you should invest. Clear? It is not like easy job. Investing in stock market easy. Investing in mutual fund is not easy. After investing in mutual fund, getting return is easy. Investing in stock market is easy. Getting return from stock market is difficult. Clear? Like in stock market, last option available. Suppose you invest in a stock market.
So mostly people will invest in stock market according to what criteria? By which share is upper side going on from past 10 for 12 sessions. Generally that will be seen. You'll generally use the different demat accounts now. When demat account you will see which stock is going upper side, you will invest in that. After investment it will decrease. That is the specialty of stock market. But don't invest according to that criteria. You have to study fundamentals of the company. What is fundamentals of the company? You have to study it strongly. Who are the promoters? What is the promoter share? Then you should invest. Even if that share is on red side also, red zone also, in future it will be green. In future it will be green. Clear? So fundamentals very important. Fundamentals should be very important. If fundamentals are not good means definitely there is a risk in that. So don't invest only on the basis of today the share is in green. From past 3-4 sessions green, I will invest. Okay. So this is stock. So stock market very high risk, very high return. In stock market also options available. High risk stock, moderate risk stock, less risk stock. Less risk stocks returns will be also limited. Moderate risk stock returns moderate. High risk stock returns also very high. Like Reliance Industries, ITC, TCS, Infosys. These stocks will have less risk. HDFC बैंक में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है. रिटर्न आता है HDFC बैंक में, but return risk is also slightly high. HDFC is also blue chip stock, but return is slightly high. So Reliance, TCS, clear? Infosys, okay? These are the blue chip stocks. ITC company, Asian Paint. So in this, risk is also limited, return is also limited. You don't expect very high return. 16-15% return yearly basis. 20-30 नहीं आता इसके अंदर. Suppose if you invest in high risky stock, Adani Power, 100% रिटर्न आता है आपको. 1 लाख रुपए लगा 1 लाख रुपए कमाते आप. माइनस आए तो 1 लाख रुपए जीरो भी हो जाते हैं फिर. But you should wait. You should wait. Clear? When suppose example my friend purchased Adani Power shares 2 years back. 150 में खरीदे हो at 150 rupees. Continuously daily minus 10 days minus जा रहा हो continuously. Then what you will think? अब तो बेच देना ही सोचते आप. बेचते शुरू हुआ तो ऊपर आना उन्होंने 60 रुपीज पे आया. 150 से कहाँ पे आया वो? 60 से 600 गया फिर वो. तो दिस इज स्टॉक मार्केट. तो स्टॉक मार्केट में शेयर कंटिन्यूसली गिरने पर नहीं बेचना. में आया बात. फंडामेंटली चेक करना हो, स्ट्रांग है नहीं है, फ्यूचर में बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता, जब बेचना. पैसे की जरूरत है बेचो. सब बोली में कुदरे हम भी कूद देंगे क्या? सब वेल में कुदरे हम भी कूदेंगे क्या? नहीं नहीं, गलत है वो. एक HDFC बैंक पास्ट 3-4 सेशन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. This is a good opportunity to purchase. Suppose you also sold, then again if HDFC bank share became 2000 rupees, you cannot have this opportunity. See, this is compulsory required bhai. When one share is increasing, compulsory it will decrease also. Why it will decrease? Simple technique I will explain. In Indian stock market, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट. इंडियन मार्केट में कौन पैसे लगाते हैं? वो लोग एक शेयर में इन्वेस्ट करते हैं एंड दे विल परचेज इन वेरी बल्क क्वांटिटी एंड दे विल बिकॉज ऑफ देयर परचेज प्राइस इंक्रीजेस. व्हाट विल इंक्रीज? प्राइस इंक्रीजेस. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एंड दे आर कमिंग, दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज कमिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस, वॉट एवर दे डिसाइडेड, देन दे विल सेल. Then they will sell. When they sell,
in bulk quantity, price will decrease and they will book their profit. Why they are investing? Profit. So first they will buy, price will increase, then they will sell. And automatically what happens? Price decrease. And again they will purchase, again they will sell. Government requires also taxes. If all people are buying, government को tax कहाँ से आएगा फिर? So government short term capital gain tax, long term capital gain tax, government require also taxes ना. इसलिए if you are investing for long term purpose, don't fear from this decrease. अदानी ग्रुप में मैं इन्वेस्ट करके बैठा तो सब लोग मेरे को डरा दिए. क्लियर? तो मैं उसको बेचा ही नहीं, उसको पूरे फ्रेंड्स बेच दिए, काफी सारे लोग बेच दिए, मैंने बेचा उसको. आज डबल प्रॉफिट दे दिया वो, और देता आगे जाके. और क्योंकि प्रमोटर अच्छा है ना वहां पे, प्रमोटर इज अच्छा रहना. प्रमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. भाई प्रमोटर का नाम बोलते हैं आप, ऐसा आइडेंटिफाई कर ले सक रहे उसको आप, ऐसा शेयर कभी भी नहीं गिरता. इवन इफ दैट इज फॉल्स, इट विल बाउंस बैक. सपोज इंडियन बिजनेसमैन, फॉर द फेमस बिजनेसमैन, एक 10 मेंबर्स के नाम बोल सकते हैं आप. अदानी बोलेंगे, अंबानी बोलेंगे आप, रतन टाटा बोलेंगे आप. क्लियर? आनंद महिंद्रा बोलेंगे आप, और बिरला बोलेंगे आप, और सुनील मित्तल बोलेंगे एयरटेल, राइट? नारायण मूर्ति इन्फोसिस बोलेंगे आप, और बोले 2-4 नाम. कौन कहते? क्या नाम बोले? हाँ, पतंजलि बराबर बोले नाम उन्होंने. पतंजलि करेक्ट. नेक्स्ट डाबर, नाम बोलो उनका, डाबर नहीं. लक्ष्मी मित्तल, और बस इतने नाम याद है. इतने नाम बोले, पूरे इशारा देख लो, पूरे ऊपर की साइड है ये. नो शेयर इज ऑन राइट साइड. ओके, अब रामू शामू प्रमोटर है, समझो, कभी भी कुछ भी हो सकता है. फिर तो promoters names and promoters holding the shares compulsory, even that fall also it will bounce back. The promoter बहुत important रहता है. Clear? So all this will understand in this subject, don't worry. Clear? चलिए, so we are discussing about what? Analysis of financial statement. Generally this discussion I am not interested to start from this area. Reasoning behind this is what? The students should have the interest in this subject. स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आने के लिए बोला सब में ये, क्योंकि अब लालची जमाना हो गया है आपका. पैसे का लालच रहा तो बच्चे पढ़ रहे. करेक्ट बोला ना मैं? तो मैं बोला ये सब्जेक्ट पढ़ने से तुम्हारा कोई नॉलेज नहीं आता है, तो आप पढ़ेंगे फिर ये. तो आपको मजा आ रहा है इसमें, हाँ ये सब्जेक्ट से पैसा बनता अपना, तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आता आप. क्या जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करके और कमा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली विल बी इंटरेस्टेड. इसलिए स्टार्ट करें उससे. चलिए अब देखिए इसको. सो रेशियो एनालिसिस इज द टॉपिक विच विल बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी. सपोज यू डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक. इन विच स्टॉक यू विल इन्वेस्ट? भाई सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक इन विच promoters are very famous, but the company in which promoters are very famous, shares is also very costly. शेयर बहुत कॉस्टली रहता है उसका. So in that shares you cannot gain very high. Clear? Suppose if you purchase a share which is available at very less price and you are holding for a longer period of time, then miracle is possible.
देखिए हैवेल कंपनी, हैवेल कंपनी का नाम सुने आप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाता है। हैवेल कंपनी शेयर अवेलेबल फॉर 20 रुपीज 15 ईयर्स बिफोर। कितने में था वो? तो मुंबई में एक पर्सन रहते हैं, विजय केडिया नाम है उनका, बहुत बड़े इन्वेस्टर है वो। ही हेवीली इन्वेस्टेड इन हैवेल्स कंपनी, हेवी इन्वेस्टमेंट करे उसमें 20 रुपीज़ के हिसाब से। अब हैवेल कंपनी का शेयर 2000 प्लस में है, 2000 प्लस में है, तो हेवीली कमा लिया। टाटा एलएक्सआई का शेयर है, टाटा एलएक्सआई का शेयर है, तो टाटा एलएक्सआई शेयर 30 रुपीज़ 45 रुपीज़ में था स्टार्टिंग, आज 8000 में है। रिलायंस कंपनी का जो है, जो रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी में छोटे एक्सपेंसेस से जितना उस करोड़ों में खर्चा आता ना, उतना भी रेवेन्यू नहीं है उसका, टाटा एलएक्सआई का। रिलायंस कंपनी के स्मॉल एक्सपेंसेस विल बी इन 1000 करोड़। टाटा एलएक्स से रेवेन्यू 1000 करोड़ भी नहीं रहता, बट शेयर कितने का है? रिलायंस कंपनी का शेयर 2000 का है, वो 8000 का है। हाँ, ये कैसा पॉसिबल है सर? उसके लिए तो रेशियो पढ़ रहे हैं आप। फ्रॉम रेशियो एनालिसिस यू विल अंडरस्टैंड दैट how it is possible, what is the calculation behind that, you will understand that. Okay, तो देखिए अब, so if you want to understand the strength, weakness and overall financial performance of the company, ratios will be the providers of complete information. So after studying these ratios, understanding these ratios, you can decide कि in this company whether should invest or not from long term point of view, clear, or from short term perspective also. So this is the advantage of ratio analysis. So in final level you learn portfolio management subject also, chapter also. In that subject we have to study okay, before investing what are the different types of analysis required. Okay, 3 to 4 types of analysis will be required. One is fundamental analysis, another is technical analysis, one is company analysis. ये 3 तरह के मेन एनालिसिस होते हैं. कंपनी एनालिसिस मीन्स व्हाट द प्रमोटर, what types of products company will manufacture, in future what will be the potential of these products, like this पूरा explanation रहता है उसमें. Clear? Next, industry analysis. Industry analysis means in which area company will operate, in future demand will increase or not, orders will increase or not. Suppose ITC company में I am advising you to invest in ITC company. आप invest करते क्या बोलो? ITC is a blue chip company, so you'll invest. नहीं करते. क्यों नहीं करते? ITC कंपनी तंबाकू बनाता है. क्या बनाता है? जर्दा. अब ये जमाने में जर्दा कोई खा रहे? पुराने जमाने में लोग खाते थे, फिर भी सिगरेट ज्यादा पीते थे. ये टाइम पे कोई कर रहे? नहीं कर रहे. तो ITC कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा है क्या? उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है. दैट्स व्हाई ITC कंपनी नाउ डिसाइडेड टू स्प्लिट होटल बिजनेस एंड tobacco business. ITC company is having different division now. They have hotels also, they have FMCG business also, they have stationery business also, tobacco business also. Right now major revenue is coming from what? Tobacco. But in future from tobacco revenue will increase? No. Because people will be more health conscious and they are generally not interested to consume tobacco related item. Because in society it is looking like awkward if any people who consume tobacco or generally using cigarette. Clear? That's why ITC company point of view you are not very much interested. So future, which company is in more profitable side? Renewable energy. Renewable energy. Suppose I advise you should invest in Adani Green. ऐसे लगा देते हैं आप. Suppose I advise you should invest in Reliance. Reliance is also invested in renewable energy. You will invest that. Because in future,
electronic vehicles will come. Clear? So that is what industry analysis. That is what industry analysis. In future, artificial intelligence will invest in SCADA, LXI, persistent system. Clear? Next, टायर मैन्युफैक्चरिंग. टायर जरूरी है नहीं है लाइफ में. टायर का कोई रिप्लेसमेंट आया क्या अभी? तो फिर टायर वाले कंपनी में भी लगा सकते हैं आप. इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे महंगा शेयर एमआरएफ रहता है. 1,14,000 का शेयर है एक शेयर. मैं पढ़ा जब 80,000 में था वो 3 months बिफोर. अब कितना हो गया? 1,14,000. एक शेयर 1,14,000 का है वो, एमआरएफ कंपनी. क्लियर? तो दैट इज ऑल्सो कंपल्सरी ना. फ्यूचर में टायर इज नेसेसरी बिकॉज व्हीकल्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड व्हाट इज मोर प्रिफर्ड ब्रांड? बट एमआरएफ का शेयर कॉस्टली है, नहीं खरीद सकते आप. तो दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव देखो. और रिसर्च करें तो आपको बालाकृष्णा कंपनी बोल के मिलता है. समझ में आया? अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, आपको नहीं मालूम है. एडवर्टाइजमेंट देख के बोल रहे हैं आप. बालाकृष्णा का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, सीएट का आता, अपोलो टायर का आता. बट सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका है मालूम है? बालाकृष्णा कंपनी का है. समझ में आया? वो स्टॉक मार्केट में गए से मिलता है आपको. इन्वेस्ट करो, कल के दिन बालाकृष्णा एमआरएफ बन सकता. नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है. क्लियर? सो दैट इज यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट? एनालिसिस. तो इंडस्ट्री एनालिसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? इंडस्ट्री एनालिसिस. तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल. क्लियर? सो दिस इज एवरग्रीन एरियाज. सो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं आप. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इन्वेस्ट. क्लियर? और भी बहुत सारे मार्केट में शेयर्स है, बट दिस इज मेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. एफएमसीजी ऑल्सो कंपल्सरी ना, राइट? नेक्स्ट इज फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस मीन्स कंपनी के ये जो कैलकुलेशंस रहते हैं. व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, व्हाट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर, व्हाट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, what is price to book value. All these are called as what? Fundamentals. Clear? Last and finally technical analysis. Technical बोलो तो charts वगैरह आते हैं उसके अंदर. Charts you have to understand, that you will understand in final level. So this is the overall analysis required for the company. So in this chapter you are understanding fundamental part. यहाँ पे कौन सा part cover होता है? Fundamental part. Fundamental part means calculations, financial, like balance sheet and P&L statement. Suppose if balance sheet, P&L statement I circulated to you, all students, and I ask, what is the performance of company? Nobody will answer, or only limited number of students will answer. Why? From balance sheet or P&L you cannot understand immediately the performance. Suppose a ready-made information I provided to you. What is P ratio, what is net profit ratio, what is return on investment, what is return on capital employed, ready-made, then you can easily interpret na, by this company this is the ratio, that company this is the ratio, comparatively this company performance is good, previous year in this year on year basis growing, previous quarter this quarter on quarter basis growing, so this is a good company. So that is what? Fundamental analysis. So from ratio all this will be understand. Okay, so this is the importance of this ratio chapter. आया समझ में आपको भी? Clear? Step by step gradually you will understand in more clear way. So first paragraph if you see here, ratio analysis is the process of identifying the financial strength and weakness of the company or enterprise by logically establishing relationship between items of balance sheet or P&L statement or both
and interpreting the results thereof in order to derive meaningful conclusion. Ultimately, we need what? Conclusion. To invest in this company or not. This company's performance is good or not. That will be understandable from these ratios. Okay. Suppose I have circulated the progress card of all students. Clear? Suppose 4 exams are conducted. All 4 answer keys, corrected papers are given to you. Then in class, nobody will understand who is the topper. Everybody will ask with each other. Suppose I given percentage wise marks, then it will be easy or not? Percentage दिए तो easy हो जाएगा, interpret करना easy हो जाएगा. So ratio analysis will provide the simplified way of explanation on what? Balance sheet and P&L of the company. Balance sheet and P&L of the company. So simplified explanation of balance sheet items, P&L items, sometimes both items for user of financial statement or user of financial statement. So for one user of financial statement, whatever information is necessary to take the formal decisions, that complete information is provided by these ratios. So that user of financial statement can take formal decisions, whether he should invest or not, whether this company is good or not. So this ratio analysis not only useful for investor, this will be useful for other users of financial statements like creditor, banks, financial institutions, employee. Clear? Suppose you joined Wipro company, you are working in Wipro, IT division, but after working 1 or 2 years, generally you want to leave. Why? Because in IT, Wipro is not number 1 company. TCS is number 1 company. Ultimately, what is the dream of every IT professional? Has to work in TCS. But suppose if Wipro company results are very extraordinary as compared to TCS, then you leave. That is the advantage of this. Suppose as compared to TCS from past 3-4 years, Wipro company results are very good, it is more than TCS performance, then no employee will leave. Because we will understand that in future it will become next TCS. So ratio is important. Employees also. Creditor is providing credit now. So he should sanction the credit or not. That is also decided on the basis of performance. Suppose 2 customers are approaching. So which customer will provide the material on credit? Customer whose profile is strong. Customer whose profile is strong. Profile is strong means ratios are strong. Ratios are strong. Bank. Now you went to bank for borrowings. So bank will provide the funding to whom? Whose profile is strong. Profile weak means no funding possible. So that is also ratios. क्या देखेगा? No ratios देखेगा. Then bank will decide. So bank will see which type of ratios, employees, investors, different users of financial statements, which ratios will be important. All this we are going to study here. That is the importance of this chapter. Clear? देखिए, पढ़ाने के बाद आपको कोई डाउट नहीं आता. समझ में आई बात? पढ़ाने के बाद आपको कोई डाउट नहीं आता है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आपको पूरे आ जाते हैं इसमें से. बच्चा फेल हुआ तो यही समझता है कि मैंने सही पढ़ लिया. ये तो गारंटी से बोल रहा हूं मैं. अगर स्टूडेंट फेल हुआ ना तो उसका दोष स्टूडेंट अपने आप को ही दे लेगा, हमारे को नहीं देगा. क्यों? क्योंकि हम पूरा पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे. ये दिमाग में रख लो आपके. तो स्टूडेंट को क्या करना है? सिर्फ मेरे को फॉलो करना है बस. मेरे को फॉलो कीजिए, सुखी रहिए.
आप मनमानी करेंगे, दुखी रहेंगे फिर। क्लियर? दूसरे दिमाग में फैक्ट्स लेकर ही मत आओ आप। डेली वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू शुड फॉलो क्लियर मीन्स प्रॉपरली। इन क्लास पूरा इंटरेस्ट से बैठना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास में जब बैठेंगे ना पूरा 100% डिवोशन इज रिक्वायर्ड। सब्जेक्ट 50% 60% वहीं पे क्रैक हो जाता है। देर आफ्टर घर पे जाने के बाद थोड़ा पढ़ लिया और परफेक्ट हो जाते हैं आप। क्लास में जब बैठ रहे ध्यान बराबर नहीं है, फिर आपको डबल पढ़ना पड़ेगा। क्लास में 100% है, 200% रहना कमिटमेंट, तो घर पर जाने के बाद 50% ही कमिटमेंट करना बाकी है आपका। So ratios meaning you understand now, it can be expressed in different way. Sometime it is expressed in percentage, sometime it is expressed in means fraction, sometime it is expressed in proportion also. Clear? फ्रैक्शन में proportion में क्या डिफरेंस है? परसेंटेज तो ऑलरेडी यू नो, तो परसेंटेज बोलते हैं। फ्रैक्शन मीन्स जैसा 1/3 1/4 ऐसा। प्रपोर्शन मीन्स तो ये भी ऐसा भी लिख सकते रेशियो, राइट? तो डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेशंस, different areas, different expressions are used. Clear? In all ways, not percentages are used, not proportions are used, not fractions are used. Clear? In different areas, different expressions are used. Now classification of ratios. Generally ratios are classified into 3 categories. First category is profitability. This is also called as general profitability ratios. Next is solvency. Next is activity or turnover ratios. Solvency ratios again divided into 2 categories, short term, long term. Short term solvency ratios also called as liquidity. Long term solvency ratios are called as leverage, capital structure, okay, or balance sheet ratios. Clear? Leverage, capital structure or balance sheet ratios. Clear? So this is the classification. So this type of ratios we have to study to understand the performance of the company. Clear? Now step by step we'll discuss all types of ratios here. So first we are discussing profitability ratios. Profitability ratios means this is generally based on profits and returns. Profits and returns. Here profit return commonly used here. Return means whatever we invested, on that also what we are getting, that return is also covered. And profit means net profit, gross profit also covered, and operating profit also covered. So in relation to sales, so profitability is calculated from sales, profitability is calculated from investment, profitability is calculated on means shareholders investments. Okay, so when we are calculating the profitability ratios based on sales, so here denominator will be always sale. Denominator will be always what? Sale. Like gross profit ratio, so gross profit by sale. Net profit ratio, net profit by sale. Operating profit ratio, operating profit by sale. Like always denominator will be what? Sale. Gross profit, net profit, already you know. Operating profit means, so like gross profit means what? Gross profit means what? मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा हूं. ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स व्हाट? देखिए इससे पहले आप जो पढ़कर आए ना, आप सुनो, प्रीवियसली आप जो पढ़कर आए ना वो सिर्फ अकाउंट कैसा करते पढ़ के आए. अब यहाँ पे वैसा नहीं पढ़ना है आपको. इंटरमीडिएट में, फाइनल में आपको पूरा R&D करके पढ़ना पड़ेगा. ओके, R&D मीन्स मीनिंग भी मालूम रहना और उसका कैलकुलेशन भी मालूम रहना और कहाँ इस्तेमाल आता वो भी मालूम रहना. तीनों चीज मालूम रहना चाहिए आपको. फार्मूला मत बोलिए, मीनिंग बोलिए. बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं. ओनली बाइंग सेलिंग, ओनली बाइंग सेलिंग से जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट. ओवरऑल एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट.
Operating profit. Operating profit means principal revenue generating activity. Principal revenue generating activity, the profit which is earned by company from principal revenue generating activity is called as operating profit. Like suppose one company will, when we calculate net profit, P&L credit side we write gross profit also, we write interest also, we write dividend also, we write rent also. But interest, dividend, rent is operating profit. This income is coming from investment. Interest किससे आता, डिविडेंड किससे आता, रेंट किससे आता, इन्वेस्टमेंट. योर कंपनी इज ए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जो आता है उसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट इज ए income coming from investment, that is non-operating. It is what? Non-operating. So operating profit means what? Principal revenue generating activity, the profit earned by the company from principal revenue generating activity, or in simple words main operational activities. बोल दो उसको, in simple words the main operational activities. Okay, student, the answer correct है. So these are the ratios based on sales. So here always denominator is what? Sales. Sales means always net sales. Sales means always what? Net sales. Net sales means what? Sales minus returns. Sales minus returns ही रहेगा यहाँ पर, net sales का मतलब. Next is based on investment. Based on what? Investments. So assets are investments or not? So first is return on total assets. Next is return on capital employed, return on equity shareholder fund. Okay. So return on total assets means from total assets this is calculated. From total assets this is calculated. Suppose total assets of the company 100 crore hai, and net profit of the company is PAT 20 crore है, तो फिर 20 डिवाइडेड बाय 100 crore कितना परसेंट रिटर्न आएगा, 20%. कितना आएगा, 20%. सो दिस इज व्हाट? रिटर्न ऑन टोटल असेट्स. 20 by 100. पैट है कंपनी, पैट इज 20 crore. कंपनी टोटल असेट्स इज 100 crore. So return on total assets will be PAT by total assets. Okay, so this is 20%. Clear? इधर रहेंगे formulas आपको, just roughly I am explaining. Okay. Next is return on capital employed. Capital employed means what? This is new term for you. Previously you have no idea about this. Capital employed. Assets means your investment, na? So when you invest, first you procure, na? When you invest, before investment, procurement required or not? So what are the sources from which you procured? What are the sources from which you procured? And that procured amount you will invest in assets, na? So the amount which is procured is called as capital employed. Like from equity, you raise equity shares, you will raise preference shares, you will raise your reserves and surplus also, and debenture bonds also you will issue. So one company will raise the funds from issuing equity share, company will raise the funds from issuing debenture, company will raise the funds from issuing preference share, and company can borrow term loans also, and company can use their own reserves and surplus also. So all this money they can use for investment or not.
So that will be called as what? Capital employed. But here we have to understand operating capital employed. What we have to understand? Operating capital employed. Suppose company has raised the money from equity shares, issuing equity shares, preference shares, debenture bond, or other borrowings, and their own reserves and surplus also, and they have invested in assets. So in assets, some of the assets will be used in operations of the business, some of the assets will not be used in operations of the business. So any asset which is not used in operation of the business, that is not part of capital employed. That is not part of capital employed. अब आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, फार्मूला रट्टा मारना नहीं है यहाँ पर. प्रीवियसली कैसे पढ़े आप मालूम है मेरे को? मगअप करते उसको आप. ऐसा नहीं पढ़ना, आप सीए पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, तो याद रहता है फिर वो. अगर आप उसको मगअप करें वेरी शॉर्ट टाइम भूल जाते फिर आप. अगर पहले से ही सिस्टमेटिक पढ़ कर आए तो बहुत अच्छी बात है, बोनस है आपके लिए वो. बिकॉज मुझे तो मालूम नहीं है कैसे पढ़े आप, और ऑन एवरेज पे बोल रहा हूँ मैं तो कि बहुत सारे लोग ऐसा पढ़ कर आते हैं. बट चेंज. So capital employed means it should be operating capital employed. Why operating capital employed required? Because you are calculating the return. So return should came from your operational activity, means operational assets. Investment. Investment is not a operational item. You invested the money in gold, real estate. So gold or real estate is your main operations. Or manufacturing goods is main operation. Manufacturing goods or rendering services main operation. So for that purpose, whatever assets you purchased, the assets in which you invested, that assets will be part of capital employed. And for those assets, whatever amount you taken into consideration, that is capital employed. Investment is not part of capital employed because investment is not a operating item. है प्लांट है, मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है. फर्नीचर यूज्ड इन ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑपरेशन, पेटेंट कॉपीराइट यूज्ड इन ऑपरेशन. बट इन्वेस्टमेंट इज इन ऑपरेशन. नो, देयर इज अ इन्वेस्टमेंट. फ्रॉम दैट यू आर फेचिंग सम इंटरेस्ट, डिविडेंड. दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम. So in calculation of capital employed, non-operating items are not considered. Understand? Like once you became cost accountant or chartered accountant, अब आप chartered accountant बन गए आप, तो क्या करते बोलो आप? अकाउंट्स का काम करेंगे, टैक्स का काम करेंगे, या फिर कहीं जॉब करेंगे उसके ऊपर आप. मैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम बोलता हूँ, वो लोग ये सब नहीं करते. म्यूजिक कंपनी में सैक्सोफोन बजाते हैं, फिर करे क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम वो लोग? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, होटल चलाते. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शू का बिजनेस है, शू का बिजनेस संभालते हैं. तो वो उनका एक्सट्रीम केस है वो. सपोज यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, यू आर practicing. So from audit work, tax work, accounting work, whatever income is coming, that is your operating income. Investment करें आप रिलायंस के शेयर में, you invested in bonds, from that you are earning some income, that is operating. No. So for practice purpose you purchase computers, laptop, MacBook, that is your operating assets. That is your operating assets. You invested in share market, investment is also asset na? Investment is also asset or not? So in balance sheet investment will come on asset side na? But that is operating asset. It is not a operating asset because that asset will not provide any operations in your business. आपके बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं करें ना उसको, आप बाहर इन्वेस्ट करें उसको. आप बिजनेस आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करे तो ऑपरेटिंग, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट हो गया नॉन ऑपरेटिंग. अंडरस्टैंड? समझकर पढ़ना पड़ेगा. क्लियर है? तो आप फार्मूले याद करने बैठे तो 50 फार्मूला ही चैप्टर में आते हैं. कितने फार्मूले आएंगे?
50, फिर भूल जाते आप, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते फिर आप, कौन सबसे पढ़िए. क्लियर. नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी. Return on equity means here we have to understand certain terms here. Here we have to understand certain terms. By in company, how many types of investors will invest the money? Debenture holder will also invest. Equity shareholder will also invest. Preference shareholder will also invest. Suppose if debenture holder want to know the return, he will concentrate on return on capital employed. Will concentrate on what? Return on capital employed. Because return on capital employed means in the capital employed, debenture is also there, equity is also there, preference is also there. And these funds are invested in assets of the company. Hence, you raise the funds from equity shares also, you raise the funds from preference shares also, company has raised the funds from debenture holder also, and they have invested in assets. So ultimately, you have to give return to debenture holder or not. You have to give return to equity shareholder or not. You have to give return to preference shareholder also or not. So debenture holder is also concerned about his investment or not. Clear? Or other investors also worried about their investment or not. So when debenture holders or other investors are interested to know what is the return on overall funds they invested. On overall funds invested means equity also, preference also, debt also. On overall funding, what is the return? If any investor want to understand that, for that return on capital employed is used. Suppose you are a shareholder, equity shareholder. You want to know return from equity shares point of view only. Equity shares point of view only, not from entire investment. Previously in return on capital employed, we have taken equity share also, preference share also, debt also. But equity shareholders are not interested in that. Equity shareholders are interested in their equity shares. How much is the equity share capital in company? According to that, how much return is coming? That is called as what? Return on equity shareholder funds. Return on equity shareholder fund. Suppose preference shareholder, equity shareholder point of view we are calculating, then return on equity. This is called as what? Return on equity. So overall point of view when you calculate return on capital employed. Equity shareholder point of view when you calculate return on equity shareholder fund. Shareholder point of view when you calculate return on equity. Understand? Suppose you want to become shareholder, either equity or preference, then you will check return on shareholder means equity. If you are equity shareholder, then you will check return on equity shareholder fund. If you are a debenture holder or you want to become investor, any of the investor in future, then you will check ROCE. Mostly in stock market ROCE is used and ROE used. ये दो इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल नहीं होता है. What is used? ओके, समझ में आया ना? मैं दिखाता हूँ, देखिए आपको. थोड़ा लेंथी टॉपिक है ये, बट कंपलसरी भी है. कोई भी एक कंपनी ले लेंगे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए. एनी कंपनी, जैसा हिंडाल्को है, देखिए हिंडाल्को कंपनी. क्लियर? हिंडाल्को कंपनी किसका? आदित्य बिरला का है. किसका है? आदित्य बिरला. हिंडाल्को कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करता है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम. डॉक्टर रेड्डीज मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी है. क्लियर? अभी नाम भी बोला था मैं आपको. तो क्लियर? तो डॉक्टर रेड्डीज और हिंडाल्को यानी वन स्क्रिप्ट देख लेंगे.
अब आपको पूरा डेटा आता देखिए इधर, this is the complete data about Dr. Reddy's lab. Clear? Means if it is not perfectly visible, don't worry. तो ये देखिए डॉक्टर रेड्डीज लैब फाइनेंशियल रेशियोस, नेट प्रॉफिट 15.4, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन असेट्स, total debt to equity. Ratio analysis, you will get complete ratios. But when you actually open not ratio analysis page, only financial data page, all ratios will not come. ROC will come, ROE will come. What will come? Ratio analysis specifically, if you interested, all ratios will come. Understand? That's why we are discussing रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑल्सो, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स ऑल्सो, तीनों है यहाँ पर, देखिए आपको मिलते हैं तीनों भी. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, नेट प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स है, इसलिए पूरा पढ़ रहे हैं अपन लोग. अंडरस्टैंड? अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं आप परफॉर्मेंस उसका, कोई भी. सबसे पहले लेटेस्ट ईयर रहता है, बाद में प्रीसीडिंग ईयर्स रहते हैं. देखो 18.54, 12.25, 18.17, 18.46, 13.34. तो ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो बेस्ट रहता है, डिक्रीजिंग में नहीं रहना. ट्रेंड क्या रहना? इंक्रीजिंग रहना चाहिए. अब नेट प्रॉफिट मार्जिन है, देखो यहाँ पे 15.4, 11.26, 16.37, 24.78, 12.36. ये डेटा है इसका, मार्च 23, 22, 21, 20, 19. अब ये देख के आइडेंटिफाई कर लेना. अब ये साल में प्रॉफिट बढ़ा पिछले साल से कम हुआ? नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर 11.26 था, अब कितना हुआ? इसलिए रेड्डीज लैब ग्रीन में आ गया है. ये इंडेक्स में बढ़ा ना प्रॉफिट. दिस इज द रेशियो एनालिसिस, इसलिए पढ़ रहे हैं आप लोग. क्लियर? Normally when you open any page, you will see return on capital employed, return on equity. बाकी सब नहीं मिलते, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स वगैरह नहीं मिलती आपको. जनरली यू विल सी व्हाट? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो ईयर ऑन ईयर बेसिस दिस शुड improve. Then automatically in that stock you can invest. One of the important ratio this is. Clear? So return on capital employed means overall point of view. Return on equity means shareholders point of view. Return on equity shareholder fund means only equity shareholder point of view. Only equity shareholder point. Again I will explain when we start the ratio discussion. Again it will come, don't worry. This is overview only. Next is in relation to equity shareholder fund. Now if you are a equity shareholder of the company, if you are not a debenture holder, you are a equity shareholder. Suppose you are debenture holder, not equity shareholder, then these ratios are not important for you.
If you are equity shareholder, then only these ratios will be important. First is earning per share, next is market price per share, third is dividend payout ratio, then dividend yield, clear, then earning yield, then price earning ratio, then रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स तो ऑलरेडी इससे पहले आ गया है, इसलिए मैं इसको नहीं रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आ गया ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग फर्स्ट वन, क्लियर. तो इक्विटी शेयरहोल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, अर्निंग पर शेयर इंपॉर्टेंट, डिविडेंड पर शेयर इंपॉर्टेंट, डिविडेंड पे आउट रेशियो इंपॉर्टेंट, ओके, अर्निंग यील्ड इंपॉर्टेंट, डिविडेंड यील्ड इंपॉर्टेंट, एंड बुक मार्केट वैल्यू पर शेयर इंपॉर्टेंट, मार्केट प्राइस पर शेयर. अब है क्या ये अर्निंग पर शेयर मीन्स व्हाट? अर्निंग पर शेयर मीन्स इन कंपनी टोटल हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स आर देयर एंड what is the profitability of the company. Net profitability means what? In company different types of investors are there, debenture holders also there, preference shareholders also there, equity shareholders also there. By after paying interest to debenture holder, after paying dividend to preference shareholder, ultimately net amount how much available? If that profit is divided by total number of shares, that is called as what? Earning per share. तो कैसे समझना है सिंपल एग्जांपल से. अब एक फैमिली है समझिए, ओके, ध्यान से सुनिए. इस फैमिली में देखिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है. मिस्टर एक्स के जो है स्पॉस और 2 चिल्ड्रन, और मिस्टर वाई का भी स्पॉस 2 चिल्ड्रन, राइट. तो मिस्टर एक्स का डेथ हो गया, मिस्टर एक्स का डेथ हो गया. सो मिस्टर वाई इज केयर टेकर ऑफ दिस मिस्टर एक्स फैमिली. मिस्टर वाई इज द केयर टेकर ऑफ एक्स फैमिली. सपोज मिस्टर वाई ब्रिंग्स 1 स्वीट बॉक्स, स्वीट बॉक्स लेकर आए. इसमें समझिए 40 स्वीट्स है. कितने स्वीट्स है? 40 स्वीट्स. तो फर्स्ट जो है इनका मिस्टर वाई क्या करेंगे? एक्स को देंगे, फर्स्ट एक्स के फैमिली मेंबर्स को देंगे स्वीट. क्यों? पहले अपने बच्चों को नहीं देंगे उन्होंने, क्योंकि हु इज द केयर टेकर ऑफ एक्स फैमिली. तो वाई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स टू एक्स फैमिली. तो फ्रॉम दिस 20 स्वीट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने. तो बचे हुए 20 किसको आते हैं? अब तो ये बचे हुए 20 जो है इन दोनों बच्चों में चले जाएंगे. तो एक को कितना मिलेगा? 10 मिलेंगे ना. तो अर्निंग पर शेयर का मतलब भी वही है, पर मेंबर हाउ मच अर्निंग, पर मेंबर हाउ मच अर्निंग. अब सपोज एग्जांपल के लिए 2 बच्चों की जगह पे मिस्टर वाई के पास अब 4 बच्चे हो गए. कितने हो गए? तो एक को कितने स्वीट्स मिलते हैं? अब 5 मिलेंगे ना. समझ में आ रहा है एग्जांपल? तो पहले अच्छा था, अब अच्छा है? पहले अच्छा था. चिल्ड्रन बढ़ते ही क्या हो जा रहा? अर्निंग पर शेयर कम हो जा रहा. तो कंपनी में ज्यादा शेयर नहीं रहना, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अंडरस्टैंड? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर शुड नॉट बी वेरी हाई. रिलायंस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर है इसलिए वो 2000 का है. टाटा एलेक्सा में शेयर्स कम है इसलिए वो 8000 का है. आया समझ में? भी क्या डिफरेंस है दोनों में? रिलायंस में नंबर ऑफ शेयर्स आर वॉल्यूमनस, इंडेक्स में नंबर 1 पे वही रहता है. और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा शेयर किसमें है इसलिए वो 2000 के रेंज में दौड़ रहा है. टाटा एलेक्सा में बहुत कम शेयर्स है इसलिए वो 8000 के रेंज में है. तो उनमें ये डिफरेंस है. तो ज्यादा शेयर वाले कंपनी में लगाए तो क्या होता? 10 स्वीट की जगह 5 मिलते फिर आपको. तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहना? कम रहना. अर्निंग ज्यादा रहना. अर्निंग शुड बी हाई, नंबर ऑफ शेयर शुड बी लेस. ये कैसे मालूम पड़ता है सर?
ईपीएस तो नहीं नहीं, कौन से कंपनी में ज़्यादा शेयर है कौन से कंपनी में कम शेयर है कैसे मालूम पड़ता? निफ्टी में उसकी लिस्टिंग नहीं रहना। निफ्टी निफ्टी मालूम है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, टॉप 30 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज का डेटा रहता है उसमें। कितने कंपनी? टॉप 50। क्लियर? निफ्टी 50 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? निफ्टी 50। 50 कंपनी जो टॉप इंडिया के हैं वो शेयर्स पूरे निफ्टी 50 में आते हैं। क्लियर? और सेंसेक्स में 30 कंपनी रहते हैं। कितने कंपनी रहते हैं? 30। तो जो भी कंपनी निफ्टी 50 में सेंसेक्स में रहता है ना, उसमें ज़्यादा शेयर रहते हैं उसमें। जो कंपनी निफ्टी 50 सेंस में रहता हो कम शेयर रहते हैं उसमें। तो टाटा इलेक्साई निफ्टी 50 में नहीं है। क्यों नहीं है? शेयर कम है उसके। फिर निफ्टी 50 वाले स्टॉक में डाले तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा नहीं आता। अर्निंग पर शेयर विल नॉट इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स विल बी वेरी हाई। तो निफ्टी 50 में वही शेयर्स आते हैं जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स विल बी वेरी हाई। लाइक रिलायंस, सबसे ज़्यादा शेयर्स पूरे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में किसके पास है? रिलायंस। क्यों ज़्यादा है उसके पास शेयर्स? उसके पास 200 सब्सिडरियाँ हैं। हाउ मेनी सब्सिडरीज? Reliance company is having small companies, 200 small companies with him. तो फिर 200 कंपनी और प्लस उसके अलग कंपनीज, कितने शेयर्स हो जाएंगे सोचो आप? The number of shares will be very high. HDFC Bank, number of shares will be very high. So the companies which are listed in the stock exchange, number of shares will be very high. तो EPS उसका ज़्यादा नहीं आता। ये टेक्निक है उसको आइडेंटिफाई करने की। आया समझ में? समझ में आ रहा है? कौन सर जा रहा है? नेक्स्ट, अर्निंग पर शेयर क्लियर नाउ। ऑन एवरी वन शेयर व्हाट इज द अर्निंग? इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर शुड बी मोर, इक्विटी होल्डर विल बी हैप्पी। अर्निंग पर शेयर लेस, इन्वेस्टर इज नॉट हैप्पी। ओके, तो अर्निंग पर शेयर डॉक्टर रेड्डीज लैब वेरी हाई रहता है और टाटा इलेक्स से भी वेरी हाई रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर मीन सपोज इफ कंपनी डिक्लेयर्स द डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो ऑन एवरी वन शेयर हाउ मच डिविडेंड दे आर गेटिंग, को बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर। ओके, नेक्स्ट इज डिविडेंड प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो मीन्स सपोज टाटा ELXI का शेयर है 8,000 रुपीज एक शेयर, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। मीन्स इन मार्केट टाटा ELXI शेयर इज अवेलेबल एट हाउ मच? 8,000। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मार्केट प्राइस पर शेयर। MPS बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एट व्हाट प्राइस शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज MPS। राइट? अब इसका अर्निंग पर शेयर कितना है? अर्निंग पर शेयर है समझो 25। अर्निंग पर शेयर कितना है? 25। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, 25 नहीं है, बहुत ज्यादा है उसका, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं। ओके, हाँ तो ठीक है, 25 नहीं 200 ले लेंगे। चलो कितना ले लेंगे? 200। राइट। सो मार्केट प्राइस पर शेयर 8,000, अर्निंग पर शेयर 200। तो अब इसको डिवाइड करो, कितना रहा है? 50, 40। तो इसका मतलब अर्निंग पर शेयर से कितने टाइम ज्यादा है मार्केट प्राइस? उसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस अर्निंग रेशियो। मींस प्राइस से अर्निंग पर शेयर से उसका प्राइस कितने टाइम ज्यादा है? अकॉर्डिंग टू अर्निंग पर शेयर हाउ मेनी टाइम्स दिस शेयर इज मोर? 40 टाइम्स। तो अर्निंग पर शेयर से 40 टाइम्स मोर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो मीन्स अर्निंग से उसका प्राइस 40 टाइम्स मोर। तो जिस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा रहता है वो कंपनी के शेयर में पैसे नहीं डालना। क्यों? अब उन्होंने गिरने के कगार पे रहता हूं, बहुत उड़ गया हूं ना। अब ज्यादा उड़ने के बाद क्या होता है? नीचे आना पड़ता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा ना रहना, पी रेशियो ज्यादा ना रहना, पी रेशियो कम रहना। क्लियर है?
अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मैच करना. सपोज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कितना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मीन्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज. जैसा बीकॉम एक इंडस्ट्री है, सी एक इंडस्ट्री है. बीकॉम में क्या है, सब्जेक्ट के नाम मालूम रहते हुए पास हो जाते हैं, होते ना वैसे ही. अब यहाँ पे चलता है क्या वैसा? तो मार्केट में भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज रहते ना, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट. तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेंचमार्क रेशियोज आर सेट. बेंचमार्क रेशियोज मीन्स इस इंडस्ट्री में पी रेशियो कितना रहना वो लोग डिसाइड करते हैं. सपोज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 50 है, कितना है, और ये कितना रहा है, तो पैसा लगा सकते हैं उसमें आप, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम है वो. एज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज लेस. जैसा मार्केट में गवर्नमेंट का रेट है जमीन का 1 लाख रुपए, और जमीन मिल रही है 70,000 रुपए में, नहीं खरीदते आप? खरीदते आप. गवर्नमेंट का रेट 1 लाख रुपए बोल रहा 5 लाख रुपए, खरीदते आप? ये भी सेम ऐसे ही है. तो बेंचमार्क रेट, व्हाट इज बेंचमार्क रेट? तो बेंचमार्क रेट इज व्हाट? गवर्नमेंट रेट. इफ लैंड इज अवेलेबल फॉर 70,000 रुपीज लेस देन दी बेंचमार्क रेट, सस्ता मिल रहा वो, लगाइए उसमें पैसे आप. बट अगर ज़्यादा महंगा है वो, लाइक 5 लाख बोल रहा है वो, तो फिर नहीं कर सकते उसमें इन्वेस्ट आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा वो. तो हियर ऑल्सो सेम, इफ पी रेशियो इज लेस देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें. इफ पी रेशियो इज वेरी हाई, हाई होता है बट वेरी हाई नहीं रहना, परेशान हो जाते हैं फिर आप. जैसे लोग अदानी के शेयरों में लगा के पैसे परेशान हो गए. अदानी टोटल गैस का पी रेशियो वेरी हाई रहता है. अदानी टोटल गैस पी रेशियो इज वेरी हाई. सो पीपल हु इन्वेस्टेड इन अदानी टोटल गैस, वेरी हाई पी रेशियो, सो दे हैव स्ट्रगल्ड. पोर्ट में लगा सकते हैं आप, पावर में लगा सकते हैं आप, इंटरप्राइज में लगा सकते हैं आप. बाकी के शेयर में लगाए तो पी रेशियो बहुत हाई है, तो एकदम बहुत ज़्यादा हाई पी रेशियो में लगाए तो फिर और नहीं बढ़ता उन्होंने. समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडेबल? तो दिस इज व्हाट? प्राइस अर्निंग रेशियो. क्लियर? चलिए लास्ट एक रेशियो एक्सप्लेन कर दूंगा आपको मैं, उसके बाद से लंच ब्रेक दे दूंगा आपको. प्राइस अर्निंग रेशियो क्लियर? तो प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा रहना कम रहना? कम रहना. आरओई सी कम रहना ज्यादा रहना? ये ज्यादा रहना. ईपीएस कम रहना ज्यादा रहना? कम रहना. क्या है? ज्यादा रहना. पी रेशियो क्या रहना? कम रहना. समझ में आ गया ना? तो नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड. ये रेशियो एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के कल एक्सप्लेन करूंगा. डिविडेंड यील्ड मीन्स सपोज वन कंपनी इज गिविंग 20 rupees dividend on one share. One company is giving 20 rupees dividend on one share, and the market price of this company, market price of companies, तो डिविडेंड पर शेयर है समझिए 20 rupees, मार्केट प्राइस पर शेयर समझिए 2000 rupees. Suppose we want to purchase this company share, you have to pay 2000 rupees and you are getting 20 rupees dividend. So what is the percentage? कितने परसेंट आ रहा है? 1%. 1% आ रहा है ना? तो इस 1% को बोलते हैं डिविडेंड यील्ड. इस मार्केट प्राइस का 1% इज डिविडेंड. मार्केट प्राइस का. तो डिविडेंड यील्ड जिस कंपनी में कम रहता है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना या नहीं करना इज ए क्वेश्चन मार्क. सपोज इफ यू वांट मोर डिविडेंड, तो ये ज्यादा रहना. फिर यू आर नॉट वरीड अबाउट डिविडेंड, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिविडेंड? शेयर होल्डर नहीं बाबा, बूढ़े लोग आ रहते हैं. शेयर होल्डर तो रह देंगे उसमें, यंग शेयर होल्डर, ओल्ड शेयर होल्डर. अब मरने वाला होना मतलब 4-5 साल में शेयर बढ़ने दो कम, दोस्तों क्या करना है, इसको डिविडेंड आना, उसको रेगुलर इनकम.
क्या आना उसको? रेगुलर खर्चा पानी को पैसा आना ना उसको. So the retired people, old age people will more worried about what? Dividend. So they will check dividend yield. They will check what? Dividend yield. So any company whose dividend yield is high, they will prefer that. Clear? Or suppose you want to make one portfolio of 10 shares. In that you are picking 2 companies of good dividend companies also. आप एक 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसमें 2 कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड अच्छा है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर कम वाला लेंगे ज़्यादा वाला लेंगे? ज़्यादा वाला लेंगे. आप समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ मैं? तो डिविडेंड यील्ड ज़्यादा रहना अच्छी चीज़ है जिसको डिविडेंड प्यारा है. ओके, जैसे एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का डिविडेंड यील्ड बहुत कम रहता है, ऑलमोस्ट ऑल 0 रहता, बट स्टॉक अच्छा जाता है, स्टॉक अच्छे से मूव होता है, स्टॉक इज इंक्रीजिंग वेरी गुड. ऑलमोस्ट ऑल इट इज गिविंग 30-40% रिटर्न इन 1.5 ईयर, 1 ईयर. डिविडेंड कुछ भी नहीं आता उसमें, और 0 डिविडेंड दिया तो भी 1 रुपये डिविडेंड देता हूँ. अगर 1000 शेयर है तो 1000 रुपये डिविडेंड आता, क्या फर्क पड़ता है उससे? बट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू मार्केट मोमेंटम. तो सबसे कम डिविडेंड यील्ड किसका रहता है? एक्सिस बैंक का रहता है, जो निफ्टी 50 के शेयर है उसमें. ओके, देखो आप वेबसाइट पे जाकर, कल दिखाऊंगा आपको मैं. तो जब अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो एक्सिस में पैसे नहीं लगाना, रिटर्न चाहिए तो लगाइए आप, कैपिटल गेन चाहिए लगाइए आप. तो बनाएगा ना पूरे ये, कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज ओवरव्यू क्लास था, कल वापस डिटेल में समझाऊंगा मैं. ये चैप्टर अगर आपका परफेक्ट हो गया ना तो स्टॉक मार्केट में धोखा नहीं खाते आप. ओके, राइट.